Guys, good morning. Good morning, everyone. Thank you for joining. Am I audible? Good morning, Yes, sir. sir. Yes, you are Yes, sir. audible, Good sir. morning. Yes, sir. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. I'm not able to connect to the internet. I'm on my mobile phone. It's the issue. Okay. So I don't have your news with me as such. So Raj, will you start your news? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Yes. Raj. Yeah. So the first news is on the Leela Hotels. So the Leela Hotels has acquired an ultra luxury resort in Kogals, up to amounting up to 560 crores from Prestige Group's subsidiary company. The property spans around 76 acres in Western Ghats and has already 71 rooms and will be launched later this year as the Leela for this century. And this moves aligns with Leela's strategy of remaining a niche, pure play luxury brand player focusing on high-end experiential hospitality. And according to the management, growth will come from scaling it within the luxury segment rather than going downward market. And coming to the operational front, in FY26 9-month period, the company has already added hotels up to 878 keys in 9-month period. And the company remains on track to meet its FY30 EBITDA guidance of around 2,000 crores and continues to grow in the same category as well. And so overall, concluding this article, company already has planned the pipeline of approx 1,000 keys across 9 different hotels, and company currently has a RevPAR of 21,000 rupees, which is commanding a premium of 1.6x compared to the luxury segment. And the outlook looks positive for the company, backed by capacity current and backed by capacity expansions. And I would also like to add that the company has an EBITDA of rupees 650 crores, and they are aiming to triple their EBITDA by FY30. Yeah, so the outlook looks positive. This was the first article. That you mentioned. Hello, Raj. What was the Yes, sir. ARR what is the ARR that you mentioned? Sir, RevPAR of 21,000 rupees on a blended basis. 21,000. Okay. लीला has a 21,000 ARR. उससे ज़्यादा है रेफ पर. नहीं सर, मेरे को. इतना ही है सर. I have checked like the numbers. In अच्छा. 3Q FY26, it is 21,500 rupees, like to be precise. अच्छा. Okay. Fine. Okay. Sir, can I Yeah, continue? sir. I have the same news on Yeah, this. yeah, okay. Yeah, okay. So good morning, everyone. So today I have the news on the Leela Palace and its latest strategic expansion. So the company has acquired a ultra luxury resort in Cook for 5.6 billion, marking a clear push into a premium wellness hospitality segment. Now, this is important because luxury wellness is one of the fastest growing segment in global travel. The Leela is strengthening its high-end portfolio through its Kurg Forest Sanctuary near Madikeri, where it has already added 71 villas spread across 76 acres, with plans to scale this up to 90 villas. So clearly, this is the long-term capacity expansion in high-value destination. At the portfolio level, total room inventory has increased significantly from 3,553 keys to 4,376 keys. This growth is supported by addition across key markets, including 250 keys in Mumbai, 546 keys in Dubai. This is the first ever properties over the seas in the Leela portfolio, and the 80 keys in Jaisalmer, highlighting the both domestic and international expansion. Now, coming to the operating performance, the Leela is expecting strong ARR growth in FY26, with average room rates projected to rise from 22,545 to 26,500, which is about a 15 to 17% increase year on year. At the same time, occupancy level have improved from 64% in Q1 to 72% in Q3 FY26, indicating strong demand, recovery, and peak season momentum. So overall, the Leela is combining luxury expansion, premium positioning, and improving operating metrics to drive sustained growth in the high-end hospitality. And sir, a part of that, I also read an article in that Madikeri region. Taj Madikeri is also operating in that location with the 63 keys room, with around per
with the room rents per night 25 to 50K. 29 to 50K. Yes, sir. Okay. Yes, Okay. sir. Yeah, quite Per night. clearly, guys. Yeah, so quite clearly, the ultra luxury and the luxury segment is doing good. I mentioned that uh, the problems hai, middle class will have the problem. Usually, the rich class don't have usually a problem with inflation increasing or something happening in the world. So, but the demand now what happens is that since many people are moving towards that for millionaire phase, startups they become unicorn. Startups are becoming unicorn, and so many people are becoming millionaires. So काफी एक data भी था एक कल भी मैंने बोला था. So this will lead to increase in luxury segment, and Ultra Leela is like something different. Yesterday I was talking about lemon tree, which I don't like personally, but Leela is something that can sorry probably be a play जहाँ पे वो can create value to the company, a value to the investors. ऐसा है. यस इस सर, पे करेंटली लीला के पास 13 ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज है, जिसमें से 8 बिजनेस सब में और बाकी बचे 5 वो लीजर में। लेकिन नेक्स्ट एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज का देखा जाए तो वो लीजर सेगमेंट पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा है। जैसे कि इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट है, एक अयोध्या में, बांधवगढ़ में, सिक्किम में, रणथंबोर में, श्रीनगर में, ये अपकमिंग इसके प्रोजेक्ट है। ओके ओके बांधवगढ़ में आई थिंक ओबराय का भी दरअसल वो फॉरेस्ट तुम्हारे फॉरेस्ट नहीं वाइल्ड वाइल्ड लाइफ लाइफ रिजॉर्ट, या वाइल्ड वाइल्ड लाइफ लाइफ रिसर्च रिजॉर्ट। यस यस वाइल्ड लाइफ रिसर्च यस ओके हर्ष एनीथिंग ऑन Hello. SUV and yeah Harsh. So am I Anything to audible? add on? Yeah, you're audible. Yeah, Harsh. Okay. Harsh, yeah, go ahead. You are Hel- mute now. Hello. Yeah, Harsh, go ahead. Okay, so sir, my news regarding Leela is largely the same. It's going to be the brand's first century. Revenue forecast would be 165 to 175 crores for the year, and margins would be largely as Leela does at 50%. And my next news is Renault's Duster is Renault's Harsh, one plans. second. Yes, sir. Harsh, your news could have been, elaborated much. Why you didn't elaborate your news? Sir, Sir, Like correct me on this, but I just thought that I should not, put more numbers in this because when I'm seeing numbers on a audio call, uh, it's very hard for the listener to actually remember all the numbers. So I keep the numbers as minimal as possible and largely focus on the point that I'm trying to make. So should I include more no, but numbers? see, data points, the more you put, the better. But data points should have, see now, if I ask you, Harsh, what is your income and what is your expense? Okay. That is Okay. actually I want. Now, I don't want what exactly Sorry, sir, your voice is expense. jarring a little. Sorry. Am I audible now? Yes, So, yes, just yes, traveling. yes, Audible? yes. So I was saying that overall, it's not always possible. Saying that you should talk of a lot of numbers, but see, majority, if you're giving a storyline should have a number. Now you have mentioned, oh, you're correct. There's Leela has starting a new with an investment of 560 crores from sale, 71 properties plans to increase within first 90 days. That's fine. So now, Okay. what is the ARR? What is the average? Okay, so whenever a That company is quite. comes in the news, not just on the project, but I have to also focus on the company itself, right? See, assuming it is your company. Assuming it's your company, you have to give me something. See, like when you say that, Rishabh, I am planning a new luxury resort. So I'll ask what is the average price. Okay. That's quite common question. That's okay. Okay, so I'll keep And that where in it is mind. located? What is there? Why are you getting a property in Kurg? Sir, Is it industry wide? largely to sir exploit the wealthy class of Bangalore, not exploit, benefit from the wealthy class of Bangalore, like Mahabaleshwar does for Correct, Mumbai. That's the point. correct, correct.
Okay, Now you obviously should know about the price. so your voice is jarring again. Hello. Okay, I'm just traveling. Hello, is it stable now? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yeah, yeah, yeah. So Yeah, should I go ahead with the proceed? next news. Yeah, Yeah, so sir, Renault plans to increase its market share to 3 to 5% from the current 1%, largely on the back of the Duster, which it's going to create in CNG and hybrid models from now on. So I think it should be linked to the High Rider news, which I told a day or two ago. The market is currently pivoting correct. from normal CNG or petrol ICT cars to hybrid cars. And I think the companies are also focusing on that. And also, it's going to give 7-year warranty, which is almost double than Maruti, Tata, and Hyundai give. I think they give 3 years warranty and or a lakh kilometers, but Renault is planning 7-year warranty or 1.5 lakh kilometers. So it shows the trust they have in their cars. Okay. I think I have one more competition to the already heated space. Yes, So what is the price? It's a 10.4 9. and the price segment which is targeting, it's already crowded. So yes, it will create some issues for Maruti. And also, sir, I apologize for my problem yesterday. I thought it was going to start 11, but the news also links with yesterday's news that I was about to give. Uh, that BE is going to propose CAFE 3 norms, which is going to affect smaller cars also. So I think it would affect Maruti and other companies that create smaller cars, both because the 10 to 20 lakh segment is highly competitive, and under 10, B is going to introduce some norms which would inflate the input cost for the companies. Yeah, yeah. Any I think this news is going on from last so many months. Uh, yes, yeah, Sir, I would like it to is yeah, add a yeah, Kaustav. something because I have sent the same news and I'm also covering Yeah, the cafe norms. So like because yeah. Maruti has that effect of from One second. Suzuki. So Kaustav, Suzuki, Kaustav, I think okay, Harsh has to finish something. Yeah, let him okay. finish. So sorry, Harsh. So sorry, Harsh. You can no, continue. no, that's okay. But you were saying Uh, something. Huh? so, sir, what I'm trying to say is Renault might take some share at the cost of Maruti and Hyundai, because Tata is largely, been downsided by Mahindra. So the main focus affected companies would be Maruti and Hyundai. Yeah, but I would say, Harsh, they are not only coming in the EVs. Now they have, I think, three launches: 1.3 liter, 1.5, and I think an EV hybrid भी launch कर रहे हैं Renault Sir, not an EV explicitly, the hybrid version. hybrid version. Yes, Because, sir, yes, as we rightly discussed, EV, the consumers don't have that much faith when it comes to four-wheeler in the EV segment. So correct. companies are rightfully adapting to it. And I also read news in the foreign markets that Ford and General Motors, they are writing off billions of dollars in investment that they plan to make in EV, because they also couldn't correctly anticipate the market for EV, and they are not seeing that much demand for EV right now in the foreign markets also. So it's not something focused to just India. Correct, correct. Okay. Yes. So, sir, my third. EV is, yeah, yeah, go ahead. Yes, the third news for today is VBL, Varun Beverages acquisition. 23%, that is an additional stake in Yagar Renewable. I couldn't find the current number, uh, but that is the additional stake that it's acquiring in Rajasthan. That is for largely captive consumption solar energy. So no, it is related to ESG norms at a cost of 7.05 crores. And it is again doing expanding itself in South Africa through Crickley Dairy for a consideration of 131 crores. It will be a Okay, beachhead front. So after an initial inorganic acquisition, it would be expanding organically from there. okay. I think it is just an update. Right. ठीक है. Usually focus on her the news that will increase the revenue. Cost कम होने में मतलब ठीक है मतलब okay. It's an update.
Sir, not regarding the Jaeger renewable, it's not really just about cost, but also ensuring reliable supply of energy. Supply. Okay. Okay. You Fine. know, in times like this, it is all the more Got it. necessary. Got it. Got it. Okay. Fine. Fine. Hello, sir. Yeah. Question. So Yeah. I Question. just wanted to add something because I've covered this Renault news Uh, and like also cafe norms, another thing which I've been covering. So they are talking about small cars. So I agree with Harsh that because Maruti will be affected the most with, no concessions being on small cars because they have this philosophy from Suzuki in which they have to make smaller cars. So as you will notice that Maruti largely has higher number of smaller cars than any other company. And coming correct. to the Renault's news, so Renault currently only has 0.8% share in the market for the as volume share in the current market, and they only currently produce petrol. So they don't have any expertise in electric. They don't have any CNG cars right now, and they only have three models. Correct. Yeah. So the three models are Triber, Kiger, and Quid. So Quid has not been performing that well. Triber and Tigers, Kiger, have been performing well. So I believe Duster has potential, and I feel like the price is not confirmed. I looked it up on Google, and I genuinely feel that the competition for Duster would be Creta, Sierra, and Seltos. So Kia Seltos, although it is not that good, Sierra from Tata and Why? Hyundai Creta. Why Vitara? Why not Vitara? So the same range, huh? I'm not sure. I've not looked a lot about Vitara, and It's the I same think range. that even the price point is quite different for them. No, no, it's the No, same range. It's the same yeah, range. Is it the yes, same All range? these are Celtas, Sierra are all competitors of Okay. Hyundai. Then I also look at Vitara because Yes. these two, three is something I looked. I also looked at, what exactly is the ground clearance, boot space, and max power. In all of these three things, the Duster is better than all of the three cars. It's the best in all Duster of them. is 1.8. Duster is Yeah, 1.8 liter, the yeah, hybrid sir. one. Yes. The hybrid one. Others are 1.5. Others are 1.5. So if Renault really has the focus to do it, they will have some potential. Yeah, so here we have to, with the auto numbers that we track, we have to do it on a monthly basis. That you have to understand, okay, if Renault has launched this year, what is the impact on the other vehicles? Now, what happens in India, probably it happens at the start. Whenever a new company comes, they have a good sale at the start, but now you have to see whether it sustains. Because it is new, you have a lot of offers, etc., etc. That is why at the start this model do well, but if it continues to do well in the future, then obviously it's a problem for this all the cars that you mentioned. Yeah, sir. so, Yeah. so I have a Yeah. doubt. May I ask, right? Yeah. Yeah. So, So when we talk about cars, in 1.5, 1.8 liter, only auto enthusiasts focus on that, right? I mean, normal people like you and me wouldn't actually look at that. We would look at mileage, comfort, headroom, boot space, and how correct. it looks, right? Correct. I had a question like Duster is in crossover and it is marketed as a sporty crossover. So, like, what kind of market do crossovers target? Auto enthusiasts or just like normal people who use it for commute? No, no, so normal people, see, normal means the one who are buying Creta, Seltos and all. So now what industry is moving towards SUV. People are preferring SUVs over sedans for me. Sedans have almost vanished from the industry. Hatchback, okay, hatchback depends on your income. If you have a capacity of buying a 10, 12 lakhs car, probably you will prefer an SUVs nowadays. So this we have to look at from auto. See, we cannot project anything. He can't buy karega, who are the buyers, etc. We have to look at the numbers. You cannot say that I cannot buy. I cannot say that you don't want to buy it. You look at this. Preference can change, and that we are seeing. The main purpose in India is that apart from preference is the after sale service. In India, people like that. They are not driving enthusiasts. तो गाड़ी कैसे भी हो हमको सर्विस अच्छी होनी चाहिए. And sir, one another thing that what you just said that the article also mentioned it. Like Duster is looking for an opportunity in the mid-sized SUV segment. And they've also said that this segment is fastest growing and it wants to get on the momentum. Yes. Yes, so that's what we have to see Uh, how the numbers come up. That's it. Sir, I want to add a point.
Yeah, yes, sir. Sir, Duster's main problem creates for the Hyundai Creta because Creta is a market leader in mid-size SUV with 34% market share, Okay. and Duster is at 23% market share. और डस्टर सबसे लोएस्ट अब तक जो इस रेंज में इसका जो कॉम्पिटिटर थे वो थे Hyundai का क्रेटा, किया सेल्टोस एंड मारुति का ग्रैंड विटारा, जिनमें सबसे Correct. सस्ती थी मारुति का ग्रैंड विटारा, वो 10.77 lakhs, Mm-hmm. but Renault Duster comes with 10.49 lakhs, even cheaper than the Grand Vitara, with 7 Okay. years warranty. एंड Okay. सर डस्टर का पहले एक अच्छा नाम भी था, मतलब ब्रांड भी थी, तो वो Correct. थोड़ा Correct. Hey, it is And not sir, only the Duster was Hello. news. Yeah, yeah. Go ahead. Sorry. sir, just adding that point only. Sir, Duster was the originally entered the compact. It created the compact SUV segment. मतलब Correct. 2013 में 2012 में आई थिंक लॉन्च हुआ था, और तब तक कोई एसयूवी सेगमेंट इतना कुछ चलता भी नहीं था। तब उसने क्रैक किया था सर। वो मंथली एवरेज मतलब उसका जो टॉप पिक था ना, अराउंड 2013 8000 सेल्स था तभी का। तो इट हैज Correct. ऑलरेडी क्रैक दिस सेगमेंट। बस उसने कुछ फेसलिफ्ट नहीं किए, एडिशनल फीचर्स नहीं लाए, उसकी वजह से मतलब जब कंपटीशन है ना 17-18 क्रेटा ये Yes. साइड से, तभी उसके Correct. उसको इश्यू चालू हुआ। बट अभी अच्छा है, इन्होंने मतलब अपडेट करके लाया, फेसलिफ्ट करके लाया। दैट विल बी गुड। बट यस, ये मिड साइज में ऑलरेडी एक अच्छा प्लेयर है। तो जो मिड साइज प्लेयर्स है जैसे क्रेटा हो गया, ग्रैंड विटारा या सीआर, ये मारुति का विक्टोरिस हो गया, तो इशू आएगा सर। Correct. Now the competition is heating up. तभी उसके पास competition नहीं था. So you can also think that ये मैंने भी पढ़ा था आर्टिकल कि तभी डस्टर का कोई competition. बट तभी तुम देखो मार्केट में कोई गाड़ी थी नहीं डस्टर को compete करने की. Now they have competition. तो यस you सर। never know. You never know what anything can happen. तो यहाँ पे डस्टर को करेक्ट। फायदा हो ना हो, हमको देखना है मारुति या होंडा को नुकसान ना हो. इफ यू आर इन्वेस्टर्स, ऐसा है. कुछ ना कुछ तो होगा स्टार्टिंग में. देयर विल बी डिस्ट्रप्शन. 1-2 महीना रहता है या फिर मे बी 6 महीना भी रहता है. बट नाउ वी हैव टू सी वेदर इट एक्चुअली टेक्स अप द मार्केट. क्रेटा का हो सकता है मार्केट, बिकॉज बहुत सारा मार्केट शेयर काफी है, इसलिए उसका पहले लूज हो सकता है. नथिंग एल्स. तो नथिंग टू टॉक मच ऑन इट. नंबर्स के अलावा हम कुछ बात नहीं कर सकते. इट इज जस्ट अबाउट गाड़ी कैसी है, क्या लगता है तुमको, रास्ते पे दिखते कि नहीं ध्यान रखो. और रास्ते पे अगर लेट्स से अगर नई डस्टर दिखते तो उसका सीरीज देखना, मतलब वही सीरीज बाकी गाड़ी को भी लगता होगा, क्योंकि वी नो इट्स अ न्यू कार. जो सीरीज आएगा, जो भी तुम विच एवर स्टेट यू आर, दैट सीरीज विल बी, यू विल नोटिस कि ये सीरीज अभी नया आया है तुम्हारे स्टेट में. ऐसे ध्यान रखना. ओके. या शिवम. शिवम. Yes, sir. शिवम, तुम्हारे न्यूज में आज वापस डेटा नहीं है. Sir, एक भी डेटा नहीं तुम्हारे न्यूज में. क्यों नहीं है? sir, it तुम is a लिख. merger. या गो एट. सॉरी, शिवम वर्मा ना. हाँ. Yes, sir. टाटा स्टील इंडिया एक्सपोर्ट्स का भेजा ना. Uh, गो एट. गो एट, ठीक है. Sir, Tata still shares in focus as firm set to merge Neelachal Ispat Nigam. The company's board approved the merger of its wholly owned subsidiary with the company. Along with other key decisions, Neelachal Ispat Nigam operates as an integrated steel plant in Odisha's Kalinganagar, which has a rated crude steel production capacity of 9.8 lakh tons per annum. So what this merger will do is simplification of structure. Instead of managing multiple companies, everything will become under one umbrella. It will help in easier decision making for management. Uh, it will reduce administrative and compliance cost. Uh, Investor can see a clearer consolidated picture of Tata Steel's business. The NNIL consists of 3% of the total Tata Steel's business, which
And the Tata Steel is expanding its NNIL business to 5 million tons. Okay. शिवम ठीक है, ये अपडेट इज फाइन, बट आई अगेन मेंशन दैट ये स्टील का न्यूज लेके तुम करोगे क्या? तुमको पता है टाटा स्टील और जिंदल स्टील के स्टील में क्या फर्क है? टाटा स्टील स्टील किसको बेचता है? कितने लोग लेते हैं? क्या प्राइसिंग है स्टील का? डू यू नो? So, uh, once, नहीं, जनरली पता है क्या? जनरली पता है क्या? देख के मत बोलो। क्या फर्क है स्टील में? तुमको सर सारा दो स्टील सामने रखे बता बता सकते हो टाटा स्टील का है, जिंदल स्टील का है? no, sir. देन बट सी, तुमको यहाँ पे इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करना है, अपडेट नहीं देना है। वापस मैं बोल रहा हूँ, तुम ये अपडेट दे रहे हो जो कि गलत नहीं है, ठीक है, बट इसका इन्वेस्टर करेगा क्या? तुमने पढ़ा, अच्छा तुम्हारे लिए जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है वो, बट व्हाट विल इन्वेस्टर डू विद दिस? अभी मर्जर हो गया अभी, तो टाटा स्टील अच्छा है और जिंदल स्टील खराब है। अभी हमने कैसा डिस्कस किया, क्रेटा ऐसी है, उसका मार्केट शेयर इतना है, इतने प्राइस की आती है, डस्टर इतने प्राइस की आते हैं, 1.8 लीटर, ऐसा तुम बता सकते हो कुछ? अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में इतना डिटेल तुमको नॉलेज नहीं है तो फिर डजंट मेक सेंस, डजंट मेक सेंस टॉकिंग ऑन टू इट। और तुम्हें डेटा क्या है इसमें? कुछ भी डेटा नहीं था, एक ही डेटा था तुम्हारा, 9.8 लाख टन पर एनम। तो फर्क समझो शिवम, अपडेट और एनालिसिस में। अपडेट में कुछ नहीं होगा, अपडेट इज लाइक बस बोल दिया, ठीक है, अब इसका आगे कुछ काम में नहीं आएगा, ये इंटरव्यू में कुछ काम में नहीं आएगा ये चीज, समझ रहे हो? Yes, sir. ओके। आ या Sir, नया। हाँ, excuse क्या me, बोल? sir. हाँ बोलो। Sir, like this is a merger, but it will help in long term for the company. So, it will not help in investment decision. इन्वेस्टमेंट तो क्या, तुम बताओ ना मुझे शिवम, मुझे बताओ, मर्जर हुआ है तो टाटा स्टील अच्छा है और जिंदल स्टील खराब है क्या? ये बताओ मुझे, इतना ही बताओ पहले। No, sir. और मर्जर हुआ है ये सबको पता ना कि अच्छी बात है, तो तुम अलग क्या बता रहे हो मुझे? वही बोला, तुम अपडेट कर रहे हो ना मुझे। तुमने कुछ किया क्या, चेंजेस किए कि सर, सॉरी, कुछ बताया मुझे, एनालिसिस किया कि ये क्यों अच्छा है वो क्यों खराब है? जिंदल स्टील इसके लिए टाटा स्टील बहुत अच्छा होगा, जिंदल स्टील बहुत खराब है, बोला क्या? पता है भी क्या तुमको? क्वेश्चन ही आता ना, Yes, sir. उनको अपडेट नहीं देना है अच्छा है बुरा है, वो तो मुझे सबको ही पता है ना। Yes, sir. कल तुम बोलोगे ऐसे डस्टर ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया सर अच्छा है, हाँ तो पता है ना अच्छा बुरा क्या है उसमें, वो क्यों अच्छा है बाकी क्यों खराब है? So, like we ओके। have to compare with the competitors. यस यस, तभी तो न्यूज का फायदा है ना। Okay. जैसे आज लीला का बोला मैंने, लीला का उसने बोला तो कितना मैंने बोला, इस 21,000 अल्ट्रा लग्जरी किसको कैटर कर रहा है? अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट को कैटर कर रहा है। देन ऐसी बातें होती है ना। Okay, sir. या नया, एनीथिंग ऑन मारुति? Yes, sir. Sir, अरे हेलो, 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 गाइस, एम ऑडिबल? हेलो, हेलो, hello, या hello. नया, या नया, Yeah. Sir, is my screen visible? एक सेकंड ना, इट्स लोडिंग, या इट्स विजिबल। Hmm. Good morning, everybody. Maruti to launch 7 SUVs in next 5 to 6 years to strengthen its position in the fastest growing segment. SUV composition ratio in the passenger vehicle segment grew from 26.5% in 2019 to 54.7% in 2024 and is expected to reach 60% soon.
The increase in SUV demand is primarily led by rising income levels, causing higher consumption and significantly larger domestic market. Maruti plans to launch entry-level car unique to Suzuki to incorporate first-time buyers. Maruti's SUV market share has improved from 16.8% in FY20 to 19.6% in FY26. This increase in market share was driven by new launches such as Vitara, Victoris, Jimny, Fronx, Grand Vitara, and full model change of Brezza in last 4 years. To conclude, with the proposed launch of SUVs, Maruti aims to sustain its market share among stiff competition from market leaders like M&M and Tata. Thank you. Okay, great. मारुति उसके बाद बाजू में उसका न्यूज भी था, मारुति रिसीव 5,700 crores notice. It's a negative for the company. ठीक है, अपडेट ही है सर, nothing else. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, So may I ask a question? yeah, Harsh. Sir, I also read the news and I wasn't sure about this IP notice that they received. I mean, the amount is very huge. It's almost, I think, 25-30% of the yearly profits. But since it was just a notice and companies generally do challenge that, and it is not the ultimate amount that they have to pay. So should we factor it as an equity analyst? Give No, this? No. No. It's just an update. Okay. Just a thing to look at if anything comes out of it. Oh. Okay. Yeah, Karthik. Yes, sir. Good morning. So my news is regarding Ather Energy, which has expanded their experience center to 500, planning to expand it to 700 by the end of FY 2026, focusing on tier 2 and tier 3 cities, is prominently increasing their sales on their affordable family friendly scooter Rista. So like Ather portfolio consists of 4 to 5 vehicles which are Rista as an affordable family scooter. Then there is 450S, which is entry level performance scooter, and then there is 450K, which is a premium product, and the most expensive product is 450 Apex, which is costing around 190K. So in January 2026, Ather has the market share of 15%, where the overall market has been led by TVS Motor with 23%, followed by Bajaj, which is 19%. Prominently, the important thing is that Ather has been increasing their market share, which was 11% in FY 2024 to now around 15 to 18%. And also in this last year basis, Rista has been the most growth scooter, which has been growth by 68%. I believe this expansion is more focused about the market, as Hero, as currently like TVS have 3,000 centers for their dealership actually. So like Ather is focusing on expanding their experience centers so that they can cope up with TVS, and also like they are more focusing on Rista now, because they understand that this two tier and tier 3 town will be more focusing on affordable options for EV scooters. Thank you. So what are the price range of this, Karthik? 4 models, huh? Sir, yeah, Rista is like starting around 70K, which is like BAS model, battery as a service. To a high-end model, it will be costing you around like 160K. Then when it comes to 450S, which start from around 101K, to top model at 130K. Then there is 400X, which is around like 150K to 180K, and the Apex model is around like 190K and goes on with that. Okay. Epic 190K. It is that expensive? Yeah, sir, it All is like a like high-end performance scooter, and it is the most expensive model, I believe, for like Ather Energy. Okay. So what I think is, see, every day something is coming about Ather. So probably Ather is doing something which is good for the industry overall, good for the company rather. See, in India, if you have more touch points, obviously it is good for any customer to buy our vehicle. Probably what I have seen are asking people who drives EV, they also have a good
good review about Ather. Ola, obviously, because of that reasons, people are not buying Ola. But now we have to see on the pricing point. TVS is doing absolutely well. ये ऑर्बिटर के बारे में भी जानना है, ये ऑर्बिटर क्या है? आई एम नॉट श्योर what is the pricing of orbiter and why they have launched TVS. मतलब सेम रेंज में है या अलग रेंज में है, बैटरी कैपेसिटी अलग है, तो देख लेना कार्तिक एक बार. सो TVS इज डूइंग a lot of entry into EVs. एंड वीडा, एक वीडा है विच इज अ कंपनी जो सस्ते में आता है. तो ये कंपनीज, इफ यू आर ट्रैकिंग अथर, तो ये सब कंपनीज के बारे में तो यू नीड टू नो एग्जैक्टली. Yes, sir. Sir, can I add one more perspective to या the साहिल, Ather Energy Service? या साहिल. Sir, coming to the news from Business Standard, page 2. So this increase of 500 touch points of this EC network. So this can significantly increase the non-vehicle revenues, which is almost about 14% for Ather only. And compared to the other IC players, this might go to around 20% or something odd percentage. So counting the 5 lakh fleet size of the Ether only, in next 2 to 3 years, this can significantly contribute to the non-vehicle revenues like that spares and service factors. Okay, okay, fine. Good one. Sir, I would like to add one thing. At that time, Orbital, I also covered that news as well at that time. So at that time, the costing was around like 50K for like a battery as a service model. Service. And like it's like for if you want full time ownership of this product, then it will start around 85K, and it will go around like 110K to 115K for top model. टॉप में आया तो है ऑर्बिटर लॉन्च एट 99,000. बट समहाउ आई एम नॉट श्योर, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है बाइक. पता नहीं, मतलब फोटोज में तो अच्छा नहीं लग रहा है कंपैरेटिवली टू एंटॉर्क, सॉरी तुम्हारा iQube एंड ऑल. सर वो काइंड ऑफ वो एंट्री लेवल सेगमेंट में उन्होंने टीवीएस ऑर्बिटर निकाला था. जैसे ये मतलब ये था जैसे चेतक, बजाज चेतक ने 2501 सीरीज निकाला था ना सर. स्टार्टिंग प्राइस मतलब फुल ओनरशिप 87,000. तो आई थिंक वही एंट्री लेवल में कोई सेगमेंट था नहीं, मतलब कोई स्कूटर थे नहीं. तो उसको कॉम्पीट करने के लिए मे बी टीवीएस ऑर्बिटर ये 85,000 से स्टार्ट होता है एक्चुअली. प्रॉब्ली उसके लिए मेरे ख्याल से वो बैटरी एज अ सर्विस ही बेटर है, उसके लिए वो लोग निकाला होगा वीडा को कम्पीट करने को. कि रूरल में वीडा काफी चलता है, ये हीरो का काफी होल्ड है ना रूरल एरिया में. यस यस यस. आई थिंक फिर इसका तो कॉम्पिटिटर आई थिंक अथर है ही नहीं. अथर इज नॉट इट्स कॉम्पिटिटर, नहीं मतलब इस नहीं. हिसाब Yes, से. sir. Actually, Vida 2.0 जो मॉडल है ना, वो बहुत चल रहा है. हम लोग के सोसाइटी में भी बहुत लोगों ने ले लिया है. 2 लोगों ने ले सस्ता लिया है. है वो. हाँ, करेक्ट, वो सस्ता है. सस्ता है. सस्ता है, आई थिंक उसी को कम्पीट करने है. तब लुक से तो मुझे आई डिडंट लाइक दिस बाइक. आई एम नॉट श्योर हाउ इट राइड्स. अच्छा, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्कूटर्स सर एज वेल. तो दिल्ली में क्या हुआ सर दिल्ली में? दिल्ली में एथर को प्रेफर कर रहे हैं, मतलब जिनसे मैंने स्टॉक किया. हाँ, या एथर इज टीवीएस के प्रिफर्ड बाय यंग कंपेरेटिवली क्राउड. एथर को प्रेफर. यस सर. यस यस, एथर इज Sir, I would प्रिफर्ड. like to add that Ather has an advantage of good UI. Like most of the people, like most of the article that I have found, वहाँ पे ये बोला गया है उनका जो UI है, like जो उनका स्क्रीन होता है और जो उनका सॉफ्टवेयर है, वो बहुत अच्छा है. सेकेंडली, उनका क्विक सर्विस का मॉडल है, जहाँ पे अगर उनका सर्विस सेंटर पास है तो 1 आवर वो सर्विस पे प्रोवाइड कराता है. सो दीज टू थिंग्स फेवर में काम करते हैं Ather के. ओके. हाँ, यही है, इंडिया में वो सर्विस का इशू है. अगर सर्विस बराबर हुआ तो पीपल लाइक योर प्रोडक्ट. मतलब प्रोडक्ट तो अच्छा है ही. ओला का भी ऐसा हो ना, ओला का भी इट वाज अ गुड यूआई, काफी अच्छा स्कूटर था, बट द प्रॉब्लम था वही सर्विस नहीं था उसका. आई थिंक इफ एथर कैन डू ऑन सर्विस. अभी क्या होता है ना प्रॉब्लम, आई विल टेल यू. सर्विसेज में क्या होता है, एज एन बिजनेस ओनर सर्विसेज में कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, एंड इट इज लाइक उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं होता डायरेक्टली. इट इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर द कंपनी. तो वो जब तक वॉल्यूम्स नहीं दिखते तब तक वो इकोनॉमी ऑफ स्केल जब तक नहीं मिलता तब तक ये एक रिस्की कॉस्ट हो जाता है टू स्केल अप योर बिजनेस. और अभी जैसे को लग रहा है कि ना अच्छे है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स अच्छे कर रहे हैं, पीपल आर प्रेफरिंग अथर ओवर टीवीएस. तो हमको वही देखना है कि इसका मार्केट शेयर क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है. बिकॉज अगर वो मार्केट शेयर कम हो गया या उसके सेल्स कम हो गए तो इट इज अ बिग कॉस्ट फॉर द कंपनी. डेप्रिसिएशन कॉस्ट बहुत हाई होता है, इसके वजह से तुम्हारे
डेप्रिसिएशन हो गया, फिर तुमको एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे, स्पेयर पार्ट्स रखने पड़ेंगे, तो वो क्या है, इन्वेंट्री डेज काफी हाई हो जाता है, उस पर कैश फ्लो पे इम्पैक्ट आता है ओवरऑल। एंड सिंस अथर इज अ स्टार्टअप, तो उसके नंबर्स पे बहुत ध्यान रखना है, सेल्स नंबर पे। एंड सेकंड इज, इफ यू आर इन्वेस्टर, प्रोबेबली तुमको लगता है कि ये एक वॉल्यूम्स के बाद नो इट विल डू बेटर, मतलब नंबर्स विल डू बेटर, तो वो ध्यान रखना होता है सिर्फ। सो फर्स्ट इज योर सेल्स, सेकंड इज योर कॉस्ट, एंड थर्ड इज योर कैश फ्लोस। तो ऐसे ही चलता है एनालिसिस। Yes, sir, but Ola cannot be compared with Ather. Ola had so many issues, and Ather is also in the same segment, but they have tremendously better quality than Ola. And Correct. since electric vehicles have like only 15% moving parts compared to ICTs, which have almost half, I think. So that also reduces the need for regular service, which in turn is better for the company also, materially and qualitatively both. यस यस यस, दैट्स इज एक्चुअली, सी मेरा मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि व्हेन यू ओपन अ सर्विस स्टेशन, तुमको पता है क्या क्या कॉस्ट आते हैं। तुम्हारा रेंट आएगा, पहले एम्प्लॉयज आएंगे, बैक एंड आएगा, तो ये बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। तो इट कैन ओनली बी सेट ऑफ विथ इंक्रीजिंग सेल्स। तो हमको भले लगता है कि सर्विस बढ़ा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे शुड आल्सो थिंक अबाउट द सेल्स। तो मार्केट शेयर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट शेयर बढ़ता है उसका एथर का, देन इट इज वेरी गुड कंपनी टू लुक एट, क्योंकि कंपटीशन है नहीं, एज राइटली मेंशन, ओला तो अभी खत्म हो चुका है। ओला का मतलब पीपल डोंट इवन प्रेफर नाउ। Yes, sir. बचा है टीवीएस ही बचा है, द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। एंड ठीक है, एक ही कॉम्पिटिटर, बजाज के पास भी सिर्फ एक ही है, चेतक ही है इसका। Yes, sir, but Ather is pricing itself in a premium segment प्रीमियम because मारा। Hero is owning like a fraction of Ather, and Hero is targeting the sub 1 lakh segment. So to Correct. avoid product cannibalization, I think Ather is intentionally pricing itself higher. But it also provides newer and innovative features like hill lock, crawl function. I think the side stand feature also was introduced by Ather first in the market. करेक्ट। इससे मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, इट इज स्कूटर सेगमेंट जो ग्रो हो रहा है इंडिया में, दैट इज वन वन रीजन, यू नो, इफ आई टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट thesis फॉर अथर, द स्कूटर सेगमेंट इज डूइंग फैंटास्टिकली वेल इन इंडिया। बट कब तक, हाउ मेनी पीपल बाय स्कूटर्स? अभी वो 1-2 लाख का जो रेंज है ना अथर का, मुझे क्या लगता है पर्सनल रीजन से, 2 लाख की मैं ईवी तो नहीं लूंगा, मुझे एक बाइक ले लूंगा। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। ऐसा लेने वाले Yes, लेते हैं तो वो, हाँ नहीं ऐसा है। नहीं sir, you're perfectly right. Actually, the okay, let's we all know that Ola cannot give that much quality, but sir, उसके range बहुत अच्छे थे. At a time, I think it gave about up to 250 kilometers, and Ather is still not going to provide that. Maybe they're not sure of their range right now, but still for 1 to 2 lakhs, it is a little bit low on the side. कॉस्टली एंड कॉस्टली साइड पे भी है ना वो 2 लाख। Yeah, तो yes, sir, तो मैं नहीं exactly. बोल रहा हूँ कि इट कैन बी गो रॉन्ग, बट ध्यान रखो रास्ते पे कि तुमको दिखते हैं क्या। मतलब पहला चैनल चेक से रास्ते से आता है, फिर नंबर्स आते हैं, ऑटो नंबर से 1 महीने बाद आते हैं ना। तुमको दिखते हैं क्या रास्ते पे, जस्ट ध्यान, जस्ट हैव अ ओपन योर आईज व्हेनेवर यू रोम अराउंड इन योर एरिया। एंड अगर तुम्हारे बिल्डिंग बिल्डिंग में किसी को लिया है, तो पूछो कि क्यों लिया है, क्या रीजन है आथर लेने का, या तुम जाके देख के आओ। कि मेरे लिए तो 2 लाख आई विल नेवर बाय, मतलब लेट्स से मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास, अगर आई डोंट ड्राइव बाइक्स, बट लेट्स से आई मीन पुणे, तो मुझे एक स्कूटर लगेगी जो फॉर मतलब फैमिली के लिए, सबकी यूज होगी, तो प्रोबेबली आई विल नॉट बाय एन एथर। 2 लाख की तो नहीं करूंगा, Yes, sir, 1 आध लाख की exactly. देख लूंगा। हाँ Even when we were looking for a scooty and we saw Ather, फिर सोचा कि उससे अच्छा तो हंटर ही ले लेते हैं, after GST reduction. करेक्ट करेक्ट। प्राइस इतने ऊपर चले जाते हैं Ather के that you have to think that स्कूटी से अच्छी बाइक ही है. तो मैं सस्ते में जाऊंगा ना, अगर मुझे इधर उधर ही जाना है तो। बट Exactly. वो भी मार्केट है, वो भी मार्केट है कि ऐसे लोग हैं जिनको वो बाइक चाहिए होता है। एवरीवन हैज अ मार्केट, राइट? तो वही देखना है Yes, कि sir. ग्रो कितना हो रहा है, ऐसा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ खराब है, बट ये मैं थोड़ा, टीवीएस वेयर वेयर द टीवीएस डिड डिड गुड इज, जैसे वो लोग ने वो जो आई क्यूब लॉन्च किया, सब रेंज पे लॉन्च किए। 1 लाख से 1,50,000 तक सब रेंज है उनके, मिनिमम स्टार्ट से 1 लाख, तो सब है उनके पास। एंड इट इज डूइंग गुड। एक ही प्रोडक्ट पे उसने इतना इतना कुछ किया। अभी और लोग ने सस्ती लाया। तो मेरा पर्सपेक्टिव है कि अगर टीवीएस इज गोइंग इनटू यू नो व्हाट यू से a cheaper variant, Hero is going into cheaper variant, battery as a service, तो अथर क्या कर रहा है? अथर इतने प्रीमियम सेगमेंट में फॉलो, मतलब why is he launching? एंड अगर लॉन्च कर रहा है तो डिमांड है क्या? मेरा
क्योंकि आई एम अनश्योर अबाउट इट एज ऑफ नाउ कि डिमांड है या डिमांड नहीं है। अच्छा। जस्ट टू ऐड सर, जो उसका एपेक्स मॉडल है ना 450 एपेक्स, वो महंगा है। बाकी आप जो रिश्ता फैमिली वेरिएंट है ना, वो आपको ऑन हाँ। रोड बोल रहा हूँ 122,000 से स्टार्ट हो जाता है। और उन्होंने ओके। अभी नया भी बोला था कि ईएल प्लेटफॉर्म पे वो 1 से 125 लाख का ऑन रोड प्राइस का मास मार्केट सेगमेंट स्कूटर ला मार्केट रहे से हैं। लाएंगे। ओके। यस ये सर। वो तो देख सर जो देख। मतलब जैसे अभी अपन आइस स्कूटर भी ले जाएंगे ना सर, आई थिंक 110 तो उसका भी लग जाता है, होंडा का 110 115। ये तो मैंने 2 3 साल पहले का प्राइस था, अभी का आइडिया नहीं एक्चुअली। तो 110 115 तो उसका भी लग जाता है सर, तो ज्यादा प्राइसिंग डिफरेंस नहीं है। और जो दिस्ता का जो है ना, स्टार्टिंग प्राइस जो 122,000 ही है सर। अच्छा। ओके। ये मेरा वो प्रीमियम, वो जो प्रीमियम बाइक में था वो मेरा था कि तो कौन सर से लोग की प्रीमियम था। तो आपको पता है, जैसे प्रीमियम जैसे हर चीज में हाँ, मतलब मार्केट हर छोटा ही चीज में रहता है। आते हैं। जैसे हाँ। मोटरसाइकिल करेक्ट। में देखेंगे ना, तो प्रीमियम मार्केट साइज छोटा है, बट वो है कि वो केटर कर सकते हो, वो एज अ प्रीमियम ब्रांड ही फीचर करता है कि भाई आप प्रीमियम चाहिए तो प्रीमियम भी है। बट वो मास मार्केट के लिए मेनली उसका तो रिश्ता ये है जो वॉल्यूम ड्राइव कर रहा है। और उसका मतलब प्राइसिंग भी सही है 122,000। और सर मेन तो कैसा है वो, आप जैसे टीवीएस से भी कंपेयर करेंगे ना, तो टीवीएस थोड़ा मास मार्केट हो गया। और करेक्ट। अपना ये हो गया थोड़ा प्रीमियम में, प्रीमियम मास मार्केट ऐसा। अच्छा। यस सर। तो मेरा वही कंसर्न है कि अगर ये सब इतने सस्ते में जा रहे हैं तो क्या अथर भी आएगा ये मॉडल में? बिकॉज आई थिंक ये लोग वॉल्यूम प्ले पे ही जा रहे हैं टीवीएस एंड वो लोग प्रॉफिट तो कर नहीं रहे ये यस सब में। बैटरी सर्विस में आई डोंट थिंक दे आर मेकिंग एनी प्रॉफिट। सर क्वेश्चन Sir, इज। यस I want to अभी highlight one point is that like people those who are buying Volkswagen or Skoda, they are not caring about the money that much. In similar way, people those who are buying Ather, they have that mindset actually. They are buying for premiumness, brand value. नहीं, आई एम So थिंकिंग ऑन अ target audience is बिजनेसमैन totally पॉइंट ऑफ व्यू। different. नहीं, आई एम थिंकिंग ऑन अ बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं मेरे सर्विस स्टेशन बढ़ा रहा हूँ इंडिया में तो आई नीड वॉल्यूम्स। ओके। Yeah, तो फिर definitely. तो अगर मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं प्रीमियम खोल दूं। मतलब लेट्स से इंडिया में रोल्स रॉयस जो है, रोल्स रॉयस के तुमको ना शोरूम्स ही नहीं मिलेंगे। तो तुमको अगर रोल्स Yeah, रॉयस sir. तुम्हारे बिल्डिंग में रहेंगे तुमको शोरूम्स ही नहीं मिलेंगे। सोचो अगर शोरूम ही Yeah. नहीं है तो सर्विस स्टेशन कहाँ पे होंगे? Yeah, sir. It means they have to tie up or their cost will increase and या somehow कॉस्ट they विल have to इंक्रीज। do हाँ। costing. तो अगर उनको कॉस्ट इंक्रीज करने खुद की, जैसे इनका ये न्यूज था कि दे आर एक्सपांडिंग डबल, दे नीड वॉल्यूम्स। एंड मेरा और एक थॉट प्रोसेस क्या था कि अगर ये टीवीएस और हीरो अगर ये वॉल्यूम सेगमेंट में आ रहे हैं तो शुड अथर बी देयर? मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उधर ही जाना चाहिए, बट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए क्या? हाँ, नहीं तो फिर अथर नीड्स टू इम्प्रूव ऑन इट्स वॉल्यूम। तो वो ठीक है, वो जो दो प्रोडक्ट है वी कैन हैव अ लुक एट कि कैसा है। मतलब आई एम अनश्योर अबाउट द सेगमेंट करंटली। तो मेरा अभी ध्यान नहीं Okay, गया, sir. बट आई मैं ध्यान रखूंगा अभी रास्ते पे क्या हो रहा है। तुम भी ध्यान सर रखना। Sir, there is एथर a का ना guy in हर Ather. क्वार्टर में Sir, ना वॉल्यूम तो बहुत इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसी क्वार्टर्स में ना 50% इंक्रीज हुआ है इस साल के क्वार्टर्स में sir, अच्छा। Q3 there is चलो guy there. Sir, I want to highlight there is guy in Ather. He's a हम्म, chief engineer actually, design department. His name is Indrajit. So I'll talk हम्म, to him and get to know what he's saying, what kind हाँ। of plan they have in their R&D team. So करेक्ट। हाँ, वो पूछा ना एक बार। ये बैटरी सर्विस तो yes, कोई भी लॉन्च कर सकता है, इट इज नॉट अ बिग डील। बट yes, sir. कि क्यों जा रहे हैं इसमें? I'll क्या ask साहिल him तुम and कुछ sir, बोल रहे थे? हाँ। क्या लेट अस नो। हाँ सर साहिल यू आर वो सेइंग समथिंग। हाँ। हाँ हाँ वो सर एक्चुअली उनका ना 50% वाई इंक्रीज ही है, 68,000 यूनिट जो सेल किया ना उन्होंने इस साल में एथर हाँ। हाँ। का। और उसमें मैक्सिमम तो रिजडा मॉडल ही है। अच्छा। हाँ, वही होगा हाँ सस्ता वाला। नहीं नहीं रिजडा Yes, सर sir, with 1.45 तक 68% जाता है। increase year on year. अच्छा। ओके। ओके। करना। और वो सर्विस नेटवर्क के साथ कैसे है, वो लोग वो वाला भी रेवेन्यू लेंगे। और इनका प्रोपैक फीचर जो है ना, वो भी इनको कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब वो लोग ने वो मॉनिटर किया है कि प्रोपैक फीचर में ना वो लोग मॉनिटर करते हैं कि हम लोग का जो सॉफ्टवेयर है जो ऑन स्क्रीन, उसमें सबसे ज्यादा लोग क्या यूज करते हैं, मैप्स यूज करते हैं या व्हाट्सएप चैट वाला यूज करते हैं। तो वो वाला भी सेग्रीगेशन उन्होंने पीपीटी में देके रखा है उनके Q3 वाले में। अच्छा। ओके। हाँ तो उसके हिसाब से वो लोग अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। ओके ग्रेट। कंपनी टू लुक एट। मतलब मैं नहीं लगा, मतलब ये दिखना चाहिए। मैं ऐसा पर्सपेक्टिव रहा था कि इफ यू गो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, इन्वेस्टमेंट थीसिस लिखते तो मेरे ऐसे क्वेश्चन आएंगे एज एनालिस्ट कि मार्केट कितना बड़ा है, कौन लोग ले रहे हैं, तुम्हारा टीवीएस और हीरो पे क्या है, अगर टीवीएस हीरो लोअर वेरिएंट पे जा रहे हैं तो अथर का क्या है। तो ये जस्ट वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। मतलब
मैं नहीं बोल रहा हूँ खराब है, सर ऐसा है। हाँ जस्ट लास्ट पॉइंट हाँ सर, जैसे आपने बोला ना कि टीवीएस बजाज जा रहे लोअर वेरिएंट पे, एथर को जाना चाहिए। चल, आई थिंक देयर इज अ प्रेसिडेंट इन लाइक आई स्कूटर ओनली, कि आपको भी पता है कि होंडा जो था, होंडा का एक्टिवा, वो एक 5-7 thousand प्रीमियम पे ही बेचता था। स्टिल इट वाज द मोस्ट टॉप सेलिंग मॉडल। सब मतलब सेलिंग उसमें मॉडल। अगर अपन अच्छा फीचर, अच्छी चीजें दे दे, तो यस, पीपल पे एक्स्ट्रा मनी एंड बाय दैट। सो आई थिंक एथर के साथ भी हो, लाइक प्रेसिडेंट है। सो अगर हाँ एथर नहीं करेक्ट। भी जाए तो इट कैन डू गुड। मतलब वो है, जैसे वो प्रीमियम मार्केट में भी अच्छा कर रहा है, जैसे जो मास मार्केट का अपन को मैंने बोला 1 से 125 लाख का लाएगा, तो उसमें भी अच्छा है क्या, तो भैया इट कैन यस ड्राइव वॉल्यूम्स। कैन ड्राइव वॉल्यूम्स, यस। तो ये वॉल्यूम्स पे ध्यान रखना कि वॉल्यूम्स कितना कर रहा है, नथिंग एल्स। So, I had a question which is tangential to the topic right now. Can I ask? क्या है, गो अहेड। Uh, Sir, since the EV has come into the market and ICTs have been decreasing, the entry barriers that were before regarding to bikes and cars, it has slowly decreased. I mean, पहले जो बैटरीज एंड चार्जर्स बनाते थे, आजकल वो भी सर स्कूटीज बना रहे हैं. So करेक्ट। it has or it is going to cause significant disruption to the market. So, sir, as an equity analyst, should I wait for the market to stabilize and then recommend any investments, or should I just see which company is doing better right now, innovating? See now, when you say entry barrier is low, so probably there are how many products? 4-5 कंपनीज तो है जो ईवीज बना रहे हैं। नहीं सर, छोटे मोटे actually, भी है, छोटे मोटे भी yes, है। sir. Yes, sir. हाँ That's what my concern is. Matter, Ampere, Oben, many more companies are coming. Carvali, Flipkart, everywhere you see. So, sir, like the entry barriers that were before, it has slowly decreased, and the market करेक्ट। share of the uh, erstwhile behemoths would also decrease with that. So, as an equity analyst, what should be my thought process regarding this? नहीं तो एंट्री barriers यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट प्रोजेक्ट कि कल कोई आके चालू करेगा। तो बस व्हेन यू टॉक अबाउट एंट्री barriers, वैल्यूएशन थोड़ा कम मिलेगा, बस दैट्स इट। कि इसका एंट्री barriers, इसको कंपटीशन कभी भी आ सकती है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको कितना, नो, इफ द प्राइस इज इंक्रीजिंग एट अ हायर पेस, तो तुमको पता होना चाहिए कि इज इट वर्थ होल्डिंग दिस स्टॉक। बट सी एट द एंड यू शुड टॉक अबाउट इंक्रीज इन सेल्स। तुमको लगता है सेल्स इंक्रीज होगा एज एन एनालिस्ट, तो यस यू शुड recommend द स्टॉक, बिकॉज सेल्स इज व्हाट matters. Sales obviously with cost as well. Sales is, see now, कैसा आता है Ather, even if a new company comes, it takes time for the company to understand, or people to understand its product. ऐसा नहीं होगा कि कल तुम चालू कर दिया, तुम बोलते मेरे पास पैसा है सर, मैं चालू करता हूँ ईवी बनाना, तुम्हारा कोई लेगा क्या ईवी? मतलब तुमको कितना पहले ट्रस्ट बनाना पड़ता है, यू नीड टू क्रिएट दैट ट्रस्ट, यू नीड टू मेक लॉसेस इन द मार्केट। सो अथर ने ये सब किया है। नाउ अथर हैज, ओला ने भी ये सब किया था। यू सी ओला का स्टॉक, ओला हैड डन फैंटास्टिक, बट somehow they were not able to sustain on it। अभी अथर है तो अथर कर सकता है क्या? ऐसा है। टीवीएस और बाकी सब तो कर ही रहे हैं। तो इफ इट्स Okay. यस, सो यस यू हैव टू, ऐसा नहीं है कि यू हैव टू वेट कि नहीं सब इवॉल्व होगा तभी है। इवॉल्व होगा तब तक तो स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा इफ इट्स इवॉल्व। तो अभी टाइम है अथर का। कैन अथर टेक ऑन टीवीएस, कैन अथर टेक ऑन हीरो, बिकॉज अथर इज बैक्ड बाय हीरो, ये भी एक ध्यान में रखना। हीरो का हाँ, इन्वेस्टमेंट yes. इसमें, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि अथर इज नॉट अ कंपनी विच इज अ स्टार्टअप टाइप्स, इट इज बैक्ड बाय ऑलरेडी existing company in India. So, sir, what you are essentially saying that I should price a company according to its own strength and Correct, limiteds. Yes. correct. Okay. See, you cannot say, na, if I and her, you and me are running in a competition, obviously you will bet on your strength, I will bet on my strength. If I think you are a better person, or if I think I'm better than you, we have to prove it in the race. तो अच्छे तो दोनों ही है ना। ऐसा नहीं होगा ना कि, let's say if you talk about competition, India and let's say Australia, okay, both are competitive team, anyone can win. Now it's up to you, what यहाँ पे analysis कोई you have पेज done. नहीं के खुला चला भी ले। अब अभी It's not something that just you talk about, no, India only will win. Competition, it's always competition. सर हाँ एक्चुअली एथर का जो मैं प्रोपैक फीचर बोल रहा था ना, उसमें वीडा वाला जो मॉडल ना, उसमें 3 साल का वारंटी आता है, और जो एथर का जो प्रोपैक वाला फीचर है ना, उसमें 5 साल का वारंटी आता है।
और Okay. एथर ने ना कॉन्फ्रेंस कॉल में ना प्राइसिंग इकोनॉमिक्स भी डिस्कस कर लिया, मतलब अपने को सब पूरा रेफरेंस वैल्यू भी मिल जाएगा कि 1.3 लाख पूरा गाड़ी के लिए, 30,000 पूरा 10 साल के लिए, 40,000 तक का बिजली जा सकता है, और 30,000 तक का मैक्सिमम सर्विस चार्जेस हो सकता है। तो मतलब 1.8 1.9 लाख में ना पूरा, मतलब उन्होंने बता दिया है कि इतना ही खर्चा आएगा 10 साल में आपको। 10 साल में? ओ, हाँ, मतलब पूरा 10 साल का, मतलब रेफरेंस लाइन मिल गया ना, तो इसके नीचे कोई कैटर कर रहा है तो हम बेट कर सकते हैं। बेटर कर सकते हैं, यस। ग्रेट। और मैं टायर्स का भी बताया कि टायर्स हो गए ना ज्यादा से ज्यादा खराब। गाड़ी में ऐसे खराब होने जैसा कुछ होता नहीं है। हाँ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं होता एक्चुअली। 30,000 भी दिया, उन्होंने बोला कि लीस्ट 30,000 हो सकता है। ओके ओके फाइन। देखना रास्ते पे क्या गाड़ियां दिखती है पत्थर की। अगर दिख रही है तो मैं जाके पूछ के आना किसी रैंडम से, ये गाड़ी क्यों ली, मैं तो पूछने का, ये अथर क्यों ली। नहीं दिखी तो नई वाली कोई, अथर क्यों ली, टीवीएस क्यों नहीं ली, क्योंकि कंपटीशन तो टीवीएस और बजाज का ही है वो रेंज में। चेतक एंड टीवीएस का आई क्यूब। ऑर्बिटर भी नहीं है, दिखता तो नहीं है। ओके गाइस, रैप इट अप। एनीवन एल्स कुछ पता है? सर परफेक्ट। सर मैंने आपको उसका भेजा था। एक बार चेक करेंगे क्योंकि ज़्यादा डाटा पॉइंट्स मिला नहीं था इसका, डस्टर वाले का। तो एक बार आप मेरे को रिवर्ट करेंगे कैसा, मतलब लिखने में क्या प्रॉब्लम थी? नहीं, दस्तर का तो न्यूज़ हो तुमको बाकी कंपनीज के बारे में मिलेगा, दस्तर का सिर्फ अपडेट ही था। यस सर। ओके। हेलो। मैंने क्रेटा का लिखा ना, क्रेटा फेसेस कॉम्पिटिटिव रिस्क, कि तुम्हारा नंबर है ना? यस सर। 9643 तुम्हारा नंबर है ना? हाँ ओके जी सर। सर। अच्छा। तो क्रेटा मैंने का उसको क्रेटा से लिंक किया बिकॉज उसका मार्केट शेयर ज़्यादा है और वो लिस्टेड है इसलिए। ये बाकी भी तो है ना प्लेयर्स उसमें, सिर्फ सिर्फ होंडा तो उसने लिखा था, न्यूज में आया था, तुमको पता है बाकी प्लेयर्स भी है उसमें। हाँ बट क्योंकि क्रेटा का मार्केट शेयर ज़्यादा है और उसका थोड़ा ठीक है मतलब। हाँ वही, बराबर है, मार्केट शेयर ज्यादा है तो उसका ज्यादा डीप हो सकता है, बट कॉम्पिटिशन तो बाकी लोग को भी है। यस सर। तो सर उसको और क्या कर सकते थे, मतलब हेडिंग में कुछ और लिखना चाहिए था? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ ज्यादा नहीं कर सकते उसको, कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक। और Hello. ओके, या या राज। Yes, sir. I have sent you a file of chalet hotels. So, sir, can you please check? हाँ, व्हाट इज दैट फाइल, आई जस्ट सॉ। सर आपने जो मतलब करने बोला था वो सर। अच्छा ओके ओके, हाँ देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। ओके ओके सर। ओके। एंड सर मैंने एक ऑटोमोबाइल का फाइल भेजा था। तो वो मैं सही बना रहा हूँ कि मैं मंथली बेसिस बनाया लास्ट 5 इयर्स का, और फिर उसको कंबाइन करके एक बनाऊंगा कि एनुअल नंबर्स ये आ रहे हैं। हाँ बराबर, एनुअल नंबर्स की जरूरत नहीं है, मंथली नंबर्स ही ठीक है ऑटोमोबाइल। अच्छा तो एनुअल फिर नंबर्स एक तो ही कभी भी शीट कर बना सकते दूँ फिर उसको, मतलब जो मैंने अलग अलग शीट्स बनाई हैं मंथली की। हो, मंथली तो एक ही शीट में डालना है ना, तो अलग अलग क्यों बनाए, वो मैंने कैसे दिखाया रिपोर्ट में? सर मैंने एक मतलब वो वाला तो मंथली वाला जैसे आपने बताया ना ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में, वैसा एक बनाया है, मंथ वाइज मंथ बना है। उसके अलावा ना एक ये बना रहा हूँ जिसमें साल के हिसाब से बनाया है कि फाइनेंशियल ईयर में कितनी नहीं कितनी सेल पहले हुई तो, और उसका टोटल। नहीं कार्तिक, वंस यू मेक मंथली नंबर्स, तुम्हारी रिपोर्ट किधर है? एक्सेल, सिर्फ यस एक्सेल काम का नहीं है, एक्सेल तुम नहीं बेच सकते सिर्फ इंटरव्यू में। रिपोर्ट किधर है इसके साथ? नंबर्स पंच ही क्यों किए, क्या समझा तुमको नंबर्स पंच करके? यस कि सर। एनुअल रिपोर्ट ही नंबर्स सर देख के कोई मतलब नहीं है, एनुअल नंबर्स, क्योंकि क्या है इंडिया में हर बार चीजें चेंज होती रहती है, कभी बारिश हो गया, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ। एनुअल नंबर्स तो वो तुम जब फाइनेंशियल मॉडल बनाओगे तब काम में आएंगे एनुअल नंबर्स। ओके। एनुअल खत्म भी किधर हुआ है, अभी तो मार्च में खत्म होगा। सर तो रिपोर्ट इज इम्पोर्टेंट, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन जब तक नहीं करते तब तक इट्स डिफिकल्ट। ठीक है ओके सर। ओके। So can I ओके ask another question? या श्योर। Sir, as an aspiring equity analyst, can we ever uh, criticize a sector? I mean, can we be critical of a particular sector or a stock that it is not doing fundamentally good? So you have to see when you are talking about Ather, see what I told you, you have to criticize other people, huh? Other stocks. If you are saying that Ather is good,
then yes, you have to criticize Hero and TVS. But you cannot start with criticism. That's sir, ye mat buy karo. That is wrong. You said you buy Ather because others are not good. This is how you criticize. You cannot start it at in a talking point. Ki, sir, I don't. When if I ask you, Harsh, what is your investment thesis? You said, sir, don't buy this. Sell the stock. That shouldn't be. I have not kept you to sell. Give me a sell rating. I have told you to give me a buy rating. Yes, and then it is all why I like, why you like. As I said, Ather is. I think it is on the negative side. You are saying on the positive side. Fine, I can have. You can have negative, but with data points. Without data points, everything is just a story. No one will believe. Okay, so thank you, sir. Okay, guys. I think we'll wrap up for today. See you tomorrow, same time. Yeah. Thank you, guys. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. You have a Thank nice you, day. sir. Thank you, sir. Thank you.